Hello guys, welcome back to another video and in today's video we discuss Arsenal versus Manchester City. ये probably सीजन का सबसे बड़ा गेम है एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्योंकि इस स्टेज पे अब लीग आ गई है जहां आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकते और मैनचेस्टर सिटी को कैचअप करना है. सो ये गेम प्राइम टाइम स्टेज पे आता है प्रीमियर लीग के एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हम इसका प्रीव्यू करेंगे. हालांकि ये प्रीव्यू काफ़ी नाइव भी हो सकता है क्योंकि अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है, इंजरी अपडेट्स आई नहीं है, पार्टी की फिटनेस का मुझे पता नहीं, पेप बढ़वा है, पेप कुछ भी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग हिज टीम. बट स्टिल विल ट्राई टू डू माई बेस्ट एंड ट्राई टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ हाउ दे कुड लाइन अप एंड हाउ द मैच कुड गो अहेड. Arsenal will set up in a 4-3-3 or a 4-2-3-1 at times, however they want, 4-1-4-1 situation where they likely do. And in the back, we have White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Partey, Odegaard, Xhaka in midfield, Saka and Keita Martinelli in front of them. I think there is whereas City will line up as Grealish, Haaland, Mahrez up top, Kevin De Bruyne, Rodri, and Bernardo Silva in midfield. And with the back four, surprisingly, Akanji, Laporte, and Walker will start in my opinion. Diaz might not be given preference in this game just because of his fitness issues. He could be included. I could be totally wrong about it. But I think City मेरे हिसाब से बैक फोर में स्टार्ट करेगी, एक मिडफील्ड थ्री में रहेगी और एक फ्रंट थ्री. अब मेरे हिसाब से जो टैक्टिकल गेम हो सकता है एंड विल टॉक इट इन टू फेजेस. पहला जब सिटी अटैक करेगा एंड जब सिटी के पास बॉल होगी. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड बिकॉज एफ ए कप में क्या हुआ था, सिटी स्टार्टेड विद द बैक थ्री, एसेंशली अ बैक थ्री, नॉट स्टार्टेड विद द बैक थ्री बट एसेंशली अ बैक थ्री जहाँ रिको लुइस स्टक इन हो गया था मिडफील्ड टू में रॉड्री के साथ. एंड दे हैड फ्रंट फोर ऑफ मारेज, De Bruyne, they had Grealish, they had Bernardo, Gundogan and Haaland up top. बट इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था लास्ट गेम में जब एफए कप में हुआ कि आर्सेनल मैन टू मैन प्रेस रख रही थी, सिमिलर समथिंग सिमिलर टू व्हाट टॉटनहम डिड. टॉटनहम ने भी मैन टू मैन प्रेस रखी और सिम आर्सेनल ने भी कुछ उसी हद तक मैन टू मैन प्रेस रखी. इन जनरल ऑल्सो आर्सेनल काफ़ी ऊपर प्रेस करती है और काफ़ी कोऑर्डिनेटेड प्रेस करती है हाई अप द पिच ताकि बॉल जल्दी रिकवर और एक काउंटर अटैकिंग प्रेस पे यू कैन विन द बॉल एंड स्कोर मोर गोल्स, विच इज़ एसेंशली व्हाट आर्सेनल डू एंड विल डू दिस गेम एज वेल. सो मेरे हिसाब से दो चीज़ें हो सकती है जो सिटी को करनी चाहिए. फर्स्ट तो बैक फोर शिफ्ट कर दो बिकॉज व्हेन यू रोटेट द बॉल इन अ बैक फोर इट्स मोर ईजियर टू रोटेट द बॉल. सो गेम प्लान कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ आके वाइड है, वॉकर वाइड है टू होल्ड विद लपोर्ट एंड अकांजी. सो एनकीटा किसी एक को ही प्रेस कर सकते हैं, रॉड्री उनके पीछे, बर्नाडो ऑल्सो ड्रॉपिंग डीप. तो ये एक ऐसे सिस्टम हो गया. साका जहाँ आके को प्रेस कर रहा है, मार्टिनेली वॉकर पे रहेगा, जाका विल प्रेस अप टू रॉड्री, डिब्रोना अप, हालैंड यहाँ पे कहीं, ग्रिलिश यहाँ पे, ओडेगार्ड will press Bernardo Silva, Xhaka will be pressed by Rodri, Partey will man mark De Bruyne, the two centre backs will be around Haaland which will be required, White Grealish पे, Zinchenko Mahrez पे. ये एसेंशियली आर्सेनल की प्रेस और आर्सेनल कुछ इसी तरह प्रेस करती है, मैन टू मैन हाई इंटेंसिटी, स्पेशली ओडेगार्ड एंड जाका. इनफैक्ट उन दोनों में भी सबसे ज़्यादा जाका एंड मार्टिनेली उस फ्लैंक पे काफ़ी ज़्यादा प्रेस होती है. सो ये एक काफ़ी बड़ा गेम सेट हो सकता है एंड सिटी को इस गेम सेट से जीतने के लिए दो चीज़ें करनी चाहिए. आइडियली दो ही चीज़ें पॉसिबल है. जब प्रेस बहुत हाई होती है, जब प्रेस बहुत इंटेंस होती है, तो सबसे ईजी वे टू प्ले द बॉल इज ओवर द टॉप एंड अ डायरेक्ट बॉल फ्रॉम एडरसन समवेयर यहाँ से कुछ हालैंड के पास. बट द प्रॉब्लम इन दिस इज दैट हालैंड डज नॉट ड्रॉप डीप इनफ, नीदर डज ही डू अ लॉट ऑफ बॉल कंट्रोल व्हेन ही इज डीपर. एंड वो उसकी स्ट्रेंथ है ही नहीं. हालैंड एक इज नॉट एन हैरी केन हु कैन ड्रॉप डीप, कलेक्ट द बॉल, डिस्ट्रीब्यूट एंड मेक अ रन अगेन. ही कैन डू दैट ऑब्वियसली, एक स्ट्राइकर वो कर सकता है एज अ प्लेयर, बट उसकी स्ट्रेंथ नहीं. उसकी स्ट्रेंथ है फिर भी टू स्ट्रग ऑफ डिफेंडर्स टू मेक द रन बिहाइंड एंड देन स्कोर और प्रॉब्ली ऑन क्रॉसेस और थ्रू बॉल्स दैट आर पुट इनटू हिम. दैट इज वन प्रॉब्लम दैट कम्स इन. एंड एफए कप में ये भी नहीं था कि ऑर्टेगा wasn't that great on long balls. Ederson is absolutely phenomenal on long balls. तो ये एक फ़ायदा कि एडरसन ये वाला गेम खेलेगा, ये एक फ़ायदा भी होगा सिटी को. मेरे हिसाब से दो चीज़ें जो इस गेम में हो सकती है. मारेस की जगह पे वी कैन सी गुंडोगान प्लेइंग दिस गेम एंड देन गुंडोगान भी टक इन हो जाएगा. सो व्हाट हैपेंस इज अगर अगर डिब्रोइना को हम विंग पे डाल दें एंड देन वी हैव गुंडोगान प्लेइंग हियर इंस्टेड ऑफ मारेस, विच इज़ अ जेन्युइन पॉसिबिलिटी इन माय ओपिनियन. लेट्स से वी हैव गुंडोगान प्लेइंग हियर इंस्टेड ऑफ मारेस. अब क्या हो जाता है कि डिब्रोइना विट होल्ड कर सकता है उस फ्लैंक पे, वॉकर विट होल्ड कर सकता है एंड देन वी हैव टू प्लेयर्स. सो रॉड्री स्टेज हियर एंड देन वी हैव टू प्लेयर्स इन बिहाइंड ओडेगार्ड एंड जाका. सो अब दे हैव टू मार्क समवन बिहाइंड देम एज वेल एंड रॉड्री को किसी एक को प्रेस करना पड़ेगा. तो जब भी ये होगा तो एक बेसिक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए क्योंकि गुंडोगान भी रन बना सकता है. वी कैन पुट बर्नाडो ऑन द विंग एज वेल एंड डिब्रोइना कैन डू द सेम. एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई. दूसरी जो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटी और काफ़ी जेन्युइनली अच्छी है,
जो एफए कप सेकंड हाफ में हुआ था कि अल्वारेस को गेम में ले आओ इंस्टेड ऑफ गुंडोगन और मे बी जस्ट इंस्टेड ऑफ मारेस which happened in the second half of the FA Cup. I think it is absolutely essential to have Alvarez in the team because Alvarez काफ़ी ड्रॉप करता है, उसकी इंटेंसिटी हाई है, प्रेस भी करता है, डीप आके बॉल कलेक्ट करके पास भी दे सकता है एंड ही इज़ परफेक्टली फाइन एंड देन यू कैन स्प्लिट हालैंड, तो हालैंड को काफ़ी जगह मिल जाती है इन दैट सिनेरियो हालैंड कैन बी हियर, Bernardo keeps dropping and then De Bruyne stays on the flank. So it becomes a front four for City with Bernardo in midfield, Rodri uske piche, and now Arsenal have to handle this press because now Arsenal won't go drop back. When in a mid block they do tend to do a 4-4 situation, two situation where Partey is here, Xhaka drops, Saka drops, Nketiah and Odegaard are managing the press when they are in a mid low block. But जब ball from the back खेली जाएगी सिटी के द्वारा, I think the press will still be high intensity, will be high, and the way to break it is either have an extra man in the midfield, I think, which is provided by Bernardo Silva and Gundogan combined with De Bruyne on the flank, because De Bruyne कट इन करके वॉकर को पुश करवा सकता है ऊपर और विट भी रख सकता है De Bruyne. Second is either Haaland drops or maybe Alvarez plays alongside Haaland and Mahrez is dropped out of the team. दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस गेम में, De Bruyne on the right flank और प्रॉब्ली इवन लेफ्ट फ्लैंक एंड बर्नार्डो ऑन द राइट फ्लैंक, बिकॉज जो लास्ट गेम में हुआ कि बर्नार्डो बिटवीन द लाइन्स तो खेल रहा था टॉटनहम के अगेंस्ट, वो बिटवीन द लाइन्स उसको फाइंड कर भी पा रही थी सिटी, बट द प्रॉब्लम वॉज बर्नार्डो सिल्वा वॉज नॉट एबल टू पुट द फाइनल पास और फाइनल क्रॉस इन साइड द बॉक्स टू हालैंड, विच इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर हालैंड टू थ्राइव एंड स्कोर गोल्स. मुझे लगता है कि अगर De Bruyne उस पोजीशन पे खेलेगा जहां वो राइट से, he can collect the ball and he can launch a cross or a through ball to Haaland, and Haaland सलीबा होगा अच्छा भाई, गैब्रियल होगा अच्छा, बट हालैंड अलग बीस्ट है, सबको पता है कि वो कैसे मसल डाउन करता है. चलो होल्डिंग का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं था एफए कप में, बट आई थिंक इवन अगेंस्ट सलीबा it will be a good match. In fact, Saliba is also very good. So it will be a very good match, but I think Haaland can trump that. And De Bruyne, I think this should be the formation that either they play, either with Alvarez or Gundogan. And then Bernardo can pair with Rodri in the midfield. And Nketiah will still be up top. Xhaka is forced to go to Rodri. Walker holding the weight. Martinelli is forced. So if Alvarez drops, so either you'll have to commit Gabriel up top, which leaves enough space for De Bruyne to make the run. So De Bruyne can then make the run ahead. But if Alvarez stays and De Bruyne drops, again Alvarez makes the run ahead. So yeah, that's the kind of situation in which City will attack. Defend करते वक्त it will be again very obvious. Arsenal overload करती है. Arsenal अपने players Odegaard and Xhaka especially, they tend to have them in the half space. Martinelli flank संभालता है, विड संभालता है, एंड आर्सेनल जब अटैक करेगी वो एक टिपिकल अटैक होगा. जिनचेंको हाफ स्पेस में आता है, वाइट भी हाफ स्पेस में आता है, पार्टी स्टेज बिहाइंड. सो डिफेंसिवली तो ज़्यादा कुछ है, मतलब सिटी को नंबर्स में डिफेंड करना. एंड ऑल्सो आई थिंक वाइज बर्नार्डो सिल्वा और अल्वारेज विल बी प्रेफर्ड ओवर मारेज, बिकॉज जब तुम इस स्पेस में खो, जब अल्वारेज स्पेस में है, यू हैव टू मार्क Zinchenko, and if Martinelli is holding wide, you'll have to mark Martinelli or charge Martinelli as well. वो जो कॉम्बिनेशन एंड वो जो इंटेंसिटी प्रेस लाता है अल्वारेज या फिर बर्नार्डो सिल्वा, आई डोंट थिंक मारेज वो इंटेंसिटी या वो प्रेस लेके आता है. लास्ट गेम एज वेल अगेंस्ट टॉटनहम मारेज वाजंट दैट गुड, एंड it is a very high possibility I think Mahrez is dropped off. Another is if Foden is fit, I think Foden is also preferred over Grealish, because again so the same, the press जो press यहाँ पे Foden करेगा between Odegaard, White and Saka, I think Grealish isn't that high on that press. He is very good, I am not denying it, but I think Foden could be preferred. But I think there is too many fitness issues Foden के around, and Grealish will start and he's also doing good, so no harm. And also for people who don't know, Grealish अपना जो numbers या maybe probably जो XG involvement है वो काफ़ी हद से अंडर परफॉर्म कर रहा है. सो ग्रिलिश हैज़ बीन प्लेइंग गुड एंड पुटिंग अप गुड नंबर्स, एंड नो डाउट विदाउट दैट. एंड हाँ, हालैंड विल ड्रॉप. सो अटैकिंग वाइज तो ये एक ऐसी इन्वर्टेड सिचुएशन आ जाती है वेयर एनकीटिया इज इन द बॉक्स, साका इज पुश्ड अप, ओडेगार्ड हाफ स्पेस में, वाइट इन बिटवीन साका, Xhaka up top in the half space, Martinelli on the flank, Zinchenko again inverted full back, Partey over here. So एक ऐसी सिचुएशन when you need your winger to press and drop, because Haaland इतना नहीं करता है. Haaland आता है but इतना नहीं. De Bruyne भी आएगा, Alvarez. So I think if not Alvarez, it should be Bernardo Silva and Gundogan. Personally, I would prefer Gundogan and Bernardo on the wing. So if there is possible that Gundogan plays here, Bernardo plays there, I think that's a genuine possibility, and I think it's a better possibility for Manchester City, because वो intensity और वो जो एक overload हो जाएगा midfield में. So the
Alvarez has like overload possible because he drops a lot and he collects the ball there and then he can distribute. Something which Foden also does in a false nine role, but I don't think false nine possible with Haaland there. And De Bruyne on the flank can also drop in deep, collect the ball and distribute it quicker, distribute it faster and wider. I think on the flank, maybe over Mahrez this game week, you can play someone like a Bernardo or a De Bruyne on that flank. ये मैं कह रहा हूँ पेप तो मोस्ट लाइकली आई थिंक स्टिल विल गो विद द कन्वेंशनल बैक फोर a midfield two of Rodri and Bernardo, front mid, then a front three of Mahrez, De Bruyne, Grealish, and a top one man Haaland. And Arsenal will go with the same lineup as predicted. मेरे हिसाब से गेम ऐसी प्ले आउट होगी. आर्सेनल के अटैक में ज़्यादा कुछ नहीं है. सिटी डिफेंड कर रही है. सिटी के डिफेंसिव एरर्स काफ़ी ज़्यादा. इनफैक्ट ऑन दिस फ्लैंक, ऑन द फ्लैंक वेयर मार्टिनेली प्लेज, सिटी सबसे ज़्यादा वीक है. सिटी ने काफ़ी कुछ अबाउट 44 चांसेस, मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज about 35 to 40% chances उनके राइट फ्लैंक से कंसीड किए this season. So I think they will try to overload this and attack this, and I think their superiority is also the Zinchenko, Xhaka, Martinelli and Nketiah drifting here. Jesus होता तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता बिकॉज हेजस मार्टिनेली की जो लिंकअप है वो काफ़ी ज़्यादा है. बट इन जनरल एनकीटिया, ज़ाका, मार्टिनेली, जिंचेंको, ये जो ओवरलोड क्रिएट किया जाता है लेफ्ट पे आर्सेनल के द्वारा, इट विल बी हाई एंड इट विल बी देयर क्लियरली. लास्ट मैच में भी आर्सेनल ने उस तरफ से अटैक करने की काफ़ी कोशिश की थी एंड दे विल अगेन ट्राई टू अटैक दैट फ्लैंक एंड ट्राई टू क्रिएट एन ओवरलोड दैट साइड. और हाँ बस इतना ही. आई थिंक दिस इज हाउ द गेम कुड प्ले आउट. आई थिंक पेप विल ट्राई टू force something. He either can make Haaland drop again, that is essential, or he will have to create an extra winger then and drop Mahrez. I think who can a person who can drop deeper also has the ability to cross and run a lot. So I think yes, this could be the game plan. And essentially वो जो high intensity press है जो आर्सेनल की फाइनल थर्ड में या फर्स्ट थर्ड में सिटी के, वो ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दी ओनली वे टू ब्रेक इट इज either let one extra man on some flank. So तुम या कोई तो एक flank overload कर लो, which will be Arsenal's left because that's probably the weaker side of Arsenal. या फिर तुम एक long ball launch करो and then you need people who can collect that long ball or drop deep and collect that long ball. And I think that in that case Alvarez will be better. The first case I think Bernardo on the wing is a better option with something looks like this. So basically Gundogan, Bernardo, Rodri and Grealish, Haaland यहाँ पे and De Bruyne यहाँ पे. Yeah, that's about it. That's my preview for the Arsenal versus Manchester City game. जहाँ तक prediction की बात है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आर्सेनल ये मैच क्लिंच कर लेगी. आर्सेनल हैज शोन एक्सेप्शनल फॉर्म. आई डोंट थिंक एवर्टन से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा. एवर्टन कुड बी एन अनॉमली बिकॉज एवर्टन का मैनेजर बाउंस आना था. एवर्टन अच्छा खेली बट फिर भी मुझे लगता है कि आर्सेनल ये वाला गेम क्लच कर लेगी. स्कोर प्रेडिक्शन एज सच कुछ है नहीं, बट अगर फिर भी मुझे करनी हो तो आई थिंक 2-1 to Arsenal. Yeah, and that's about it. I think if you enjoyed this video, please hit the like button and please consider subscribing. We want to make more such content, make more previews, probably previews of more games throughout. We can do a stream, and in general इसका review भी आएगा, tactical review आएगा, breakdown आएगा, game week review भी आएगा. So make sure you hit the subscribe button, hit the bell icon as well so that you're notified when we put out a video. This is FPTF signing off. Cheers.